acquisition. What is the problem now is that state government has, once the state government has agreed that they will pay 25% of the total cost of land acquisition will be borne by the state government. That was the assurance given by the state government, but unfortunately, the state government has withdrawn from the promise. So, the state government has withdrawn. The state government has withdrawn. The state government has withdrawn from the assurance, and they are not ready and willing to pay the 25% of the land acquisition cost. And subsequently, the Government of India, Ministry of Road and Transport, Nitin Gadkari has suggested that if you are not able to pay the 25% of the land acquisition cost, GST exemption may be given for the materials of the construction, and also royalty for the rock blasting has to be given. And the state government and the central government had series of discussions, but so far no final decision has been taken. What is the problem is, it is 2 years back, the acquisition proceedings have started and the people are suffering. They are ready and willing to surrender the land. Notification is over. They are not getting the compensation. They are in big difficulty. So my submission to the Government of India is 25% of the total cost of land acquisition will come only 250 crores of rupees. Why should you depend and rely on the state government? The total cost of the construction of the road is 2,700 crores. If the Government of India is able to bond 2,700 crores of rupees for the national highway, greenfield highway, new highway, why should we rely upon the state government? So my submission to the Government of India is, please bear the total cost of the construction of the highway and expedite the steps of the acquisition, complete the acquisition at the earliest, and the compensation be provided to the people belonging to that area, and the proceedings have to be initiated at the earliest of National Highway 744. Thank you very much, sir. Thank you, Chairman, sir. आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। पश्चिम बंगाल के सरकार ने हमेशा अपने जनता को पॉलिटिकल कारणों से वंचित किया कर रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2020 में एक डिसीजन लिया कि कॉमन सर्विस सेंटर जो केंद्र द्वारा चलाया जाता है उसको बंद कर देने के लिए। अब सोचिए, कॉमन सर्विस सेंटर केंद्र द्वारा चलाया गया ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से जो साधारण लोग हैं, जो जनता है, उनको तरह तरह के हेल्प मिलता है। जो केंद्रीय जो प्रकल्प है, जो प्रोजेक्ट्स है, उसका हेल्प मिलता है। उसके साथ साथ जो आधार कार्ड का भी हेल्प उनको मिल सकता है वहां से। उनके द्वारा बहुत बहुत काम हो सकता है सीएससी के द्वारा। बंद सिर्फ नहीं किया, इसके कारण 40,000 लोग जो युवा इसके साथ जुड़े हुए थे, जो वहां पे जिनका इनकम होता था, जो सीएससी चलाते थे, उनको जो पंचायत की ऑफिस से वहां से डरा के, गुंडे देकर, धमका के उसको बाहर निकाल दिया गया कि आप यहाँ पे सीएससी नहीं चला सकते, सीएससी आपको बंद करना पड़ेगा। जो ऐसी सरकार, जो सरकार अपनी जनता की नहीं सुनती, जो सरकार अपने जनता को प्रताड़ित करती है, वो सरकार यहाँ पे आके अपने जनता के लिए जो आंसू, जो देखने वाला आंसू बहाते हैं। ऐसा नौबत आ गया कि उन्होंने, सरकार ने ये डिसीजन लिया कि जो इकोनॉमिक सेंसस है वो नहीं किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। आप बताइए चेयरमैन सर, अगर इकोनॉमिक सेंसस नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में कौन आदमी गरीब है, कौन अमीर है? और अगर इकोनॉमिक सेंसस नहीं हुआ तो कहां से लोगों को वो आप प्रोजेक्ट बनाएगा? क्या आपके पास अगर डेटा ही नहीं है तो आप गरीबों के लिए प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? तो इसके ऊपर जनता की डिमांड के कारण हमने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पीआईएल भी लगाया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बोला है कि आप इसके ऊपर आपका अपना एफिडेविट दाखिल कीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार डिले कर रहा है, एफिडेविट भी नहीं दाखिल कर पा रहा है और उनको 12 तारीख तक का टाइम दिया गया। अगर विदिन 12 आप अगर एफिडेविट नहीं कर पाए तो आपको 50,000 रुपये का जुर्माना आएगा पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर। तो इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, पश्चिम बंगाल की जनता को हित को ध्यान में रखते हुए रेल स्टेशन और पोस्ट ऑफिस जो है वहां पे सीएससी फिर से चालू किया जाए, तो पश्चिम बंगाल के जनता उस सीएससी का लाभ ले पाए। नहीं तो पश्चिम बंगाल की सरकार पश्चिम बंगाल की जनता को प्रताड़ित कर रही है। थैंक यू सर। सर, दिस इज रिगार्डिंग माय स्टेट ओडिशा। सर, देयर वर 34 गवर्नमेंट and 124 private polytechnics
which includes 22 new polytechnics, including one in my parliamentary constituency, Barampur, under the scheme of submission on polytechnics under coordinated action for skill development, covering all the 30 districts with at least one government polytechnics in Odisha. Sir, I thank the Union government for providing central financial assistance for implementation of the schemes, upgradation of existing polytechnics for 11 polytechnics and construction of women's hostel for 13 polytechnics. However, sir, there has been a critical issue before the state, and that is shortage of trained faculty required for these polytechnics in the Odisha. There is only government polytechnic at Bhubaneswar, which has an extension center, that is National Institute for Technical Teachers Training and Research, Calcutta, under the Ministry of HRD, providing only short-term training, that is without any practical skill training facilities. Odisha doesn't have a board of practical training for which technician and graduate apprenticeship program and graduates are hampering. Sir, through you, I request the Honorable Minister for Education to consider setting up of a technical teachers training institute on the pattern of National Institute for Technical Teachers Training and Research with practical training facilities to enable the Odisha to create a pool of trained teachers of the polytechnics to maintain quality of teaching in government and private polytechnics at Barampur and Odisha, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Shri Om Prakash Bhopal Singh ji. धन्यवाद सभापती महोदय. मी महाराष्ट्रातील अतिशय ज्वलंत विषयाकडे केंद्र सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितोय. अध्यक्ष महोदय, मराठा समाज आणि धनगर समाज हा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रामध्ये रस्त्यावर उतरलाय. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून जवळपास 100 पेक्षा अधिक युवकांनी स्वतःच्या प्राणाची आहुती हे आरक्षण मिळावं म्हणून त्या ठिकाणी दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, 15/11/2018 गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला 13% नोकरी आणि शिक्षणामध्ये त्या ठिकाणी आरक्षण दिलं गेलं. हे आरक्षण दिल्याच्या नंतर या आरक्षणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली. त्याच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण रद्द करण्याच्या दृष्टीने याचिका दाखल झाली. ही याचिका दाखल झाल्याच्या नंतर 20/9/2020 रोजी याच सार्वभौम सभागृहात मी केंद्र सरकारकडे मागणी केली होती की तामिळनाडूमध्ये 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याच्या नंतर सुद्धा तिथलं आरक्षण टिकलं होतं. तर केंद्र सरकारनं त्याच पद्धतीने हस्तक्षेप करून ह्या सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयातल्या याचिकेमध्ये हस्तक्षेप करावा आणि हे आरक्षण टिकण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावा. पण दुर्दैवानं त्या ठिकाणी तिथं लक्ष दिलं गेलं नाही त्या मागणीकडे आणि 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी या मराठा समाजाच्या आरक्षणाला दुर्दैवानं सुप्रीम कोर्टामध्ये स्थगिती मिळाली. अध्यक्ष महोदय, याच्यानंतर 18/3/2021 आणि 14/12/2022 या 2 वेळेसही हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टामध्ये न टिकण्यामागचं प्रमुख कारण होतं की आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त ओलांडल्या गेल्यामुळं हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्दबादल ठरवलं होतं. मी या दोन्ही वेळेस मागणी केली होती की केंद्र सरकारनं आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा वाढवण्याच्या दृष्टीनं तशा पद्धतीनं संविधानिक दुरुस्ती आणून ती आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त वाढवावी. त्याचबरोबर नोव्हेंबर 2023 रोजी सुद्धा खासगी विधेयकाच्या माध्यमातून सुद्धा प्रायव्हेट मेंबर बिलच्या माध्यमातून सुद्धा ही आरक्षणाची मर्यादा संविधानिक दुरुस्ती करून वाढवावी अशा प्रकारची मागणी मी लोकसभेकडे केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, एवढंच नाही, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या शिष्टमंडळानं महामहिम राष्ट्रपती महोदयांची सुद्धा भेट घेऊन मराठा आणि धनगर समाजाचं आरक्षण मिळण्याच्या बाबतीत
केंद्र सरकारनं लक्ष घालावं, आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी यासाठी भेट घेतली. त्यांना सुद्धा एक तशा प्रकारचं निवेदन त्या ठिकाणी दिलं गेलंय. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होतोय. 24 डिसेंबर पर्यंत सरकारनं पहिल्यांदा एक मुदत दिली, राज्य सरकारनं दुसऱ्यांदा एक मुदत दिली, पण दुर्दैवानं जो शब्द दिला तो राज्य सरकारकडून पाळला गेलेला नाही. त्यामुळं याच्या बाबतीत मराठा समाजामध्ये, धनगर समाजामध्ये प्रचंड प्रमाणात त्या ठिकाणी असंतोष आहे. आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे माझी विनंती आहे की आता लोकसभेचं अधिवेशन चालू आहे, तर केंद्र सरकारनं तातडीनं संविधानिक दुरुस्तीचं विधेयक आणून आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त करून मराठा समाजातील युवकांना त्या ठिकाणी न्याय द्यायचं काम करावं, ही मागणी मी आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे करतो. श्री टी.आर. परिवेंद्र महोदय, मैं एसोसिएट कर रहा हूँ. ओके ओके, सेंड द स्लिप. श्री टी.आर. परिवेंद्र जी, यस प्लीज. Thank you, Chairman, for giving me the opportunity 2 मिनट में अपनी बात कहिए प्लीज. to raise an important issue for a speedy implementation of Women Reservation Bill named Nari Shakti Vandan Abhiyan, which was passed in the Parliament on 20 September 23 during the special session. The said bill has many special features like 1/3 of the seats in Lok Sabha and state assemblies and the legislative assemblies including SC/ST seats. Further, seats reserved for women will be rotated after each delimitation as determined by law made by the Parliament, through which the government made all women more powerful and self-empowered in the decision-making body. In this context, I would like to emphasize that even though the Honorable Union Home Minister has clarified during the discussion on the bill that reservation for women will not be implemented in the upcoming 2024 election. The reservation will be effective after the census conducted after the commencement of the bill has been published. In view of the above, I urge upon the Union government to take early action to conduct census and to constitute delimitation commission to decide which seat will go to the women after the delimitation exercise. थैंक यू. श्री विष्णु दयाल राम जी. धन्यवाद सभापति महोदय. मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 2 जिला आते हैं, पलामू एवं गढ़वा. ये दोनों जिले आकांक्षी जिलों की सूची में हैं और यहाँ की 80% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है. परंतु दुर्भाग्यवश ये दोनों जिले रेन शैडो एरिया में पड़ते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि प्रतिवर्ष यहाँ तो या तो अतिवृष्टि होती है या अनावृष्टि होती है, सीट बदल लीजिए, जिससे फसलें मारी जाती हैं और लोग बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं, पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं. यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उद्योग धंधा नहीं है, जबकि उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए यहाँ पर सारे तत्व मौजूद है. जमीन है, खनिज है, पानी है, बिजली है, वगैरह वगैरह. उद्योग धंधों के नाम पर मात्र एक कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री है, जिसका ही उत्पादन क्षमता बहुत सीमित है और रोजगार देने की क्षमता और भी ज़्यादा सीमित है. ऐसी परिस्थिति में लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और प्रतिवर्ष जब झारखंड से बाहर रोजगार के लिए जाते हैं तो उनकी लाशें आती है जो बहुत हृदय विदारक सीन उत्पन्न करती हैं. ऐसी परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से माननीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जी से अनुरोध है कि वहाँ पर खाद का कारखाना स्थापित करने की कृपा करें, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, कृषि की उपज में वृद्धि हो सके और पलायनवाद की भी समस्या समाप्त हो सके. धन्यवाद. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी.
Thank you, Speaker, sir, for giving this opportunity. Sir, this is a very serious issue and a long pending issue which is impacting my constituency, Jaipur. Sir, this is about the transfer of EPF past accumulations of employees of erstwhile Built Graphic Paper Products Limited, BGPPL, Unit Seva, which comes under OR/BAM/2910. They are now reporting compliance to RPFC Barampur being employees of Messrs. Mother Earth Resources Private Limited, MERPL, Seva, which is ORBAM/2468945. Sir, isme the problem is this Seva unit, which was sold by BGPPL to MERPL in the month of February 2020. But after that, the PF amount, the accumulated PF accumulation, this is under RPFC Kolkata, and they need to transfer it to RPFC Barampur. Sir, this has been, we've been told that all permissions are now available. The trust is ready with the requisite fund towards the payment of the past accumulation. It is also confirmed the concern that entire fund is generated from accretion of the trust and not from sale of any securities or otherwise. So the retired legal heirs of expired employees have been approaching multiple times, and whenever I go there, they approach me on their pending dues. As the matter is pending for more than a year and a half, this has put the concerned employees towards unexplainable difficulties. So the district administration has also written a letter to the chairman, Central Board of Trustees on 10th April 2023, but there has been no response. We've been following with the Regional Provident Fund Commissioner, EPF of Calcutta. There is no response. KCDPF Trust, Calcutta, they have written to RPFC Calcutta to resolve the issue of PF transfer. There is no response. The RPFC Barampur, some fellows from there, they visited Jaipur also. They are saying they're helpless until RPFC Calcutta transfers the fund to RPFC Barampur. So, sir, through you, I would like to request the Honorable Minister of Labour and Employment to take up the issue and instruct the transfer of Provident Fund of retired expired employees of Messrs. Mother Earth Resources Private Limited, Jaipur, from the KCT PF Trust, Calcutta to RPFC Barampur, Odisha, in the largest interest of employees of MS Mother Earth Resources Private Limited, Jaipur, Koraput, Odisha, sir. Thank you, sir. I would appreciate if the ministry would take this cognizance of the situation and the ground reality and do the thing at the earliest. Thank you, sir. Sir, with a heavy heart, I would like to draw the kind attention of this August House as well as the Minister for Home about the sad plight of people of Tamil Nadu. So the recent flood have battered more than 1 crore people in city of Chennai, districts of Tiruvallur, Kanjipuram, Chengalpet, and Ranipet also. So the situation is very grim, and people are they are inside the home for the past 3 days. From 3rd onwards, there is a continuous torrential rain. And cyclone is its fury has fully dedicated its fury to the people of Tamil Nadu. So it was so heavy and could not bear with it, and people are stranded elsewhere. The trains are halted outside the city of Chennai, and flights are not moving. And more people, thousands of people are even, they could not get the food supplied by the government of Tamil Nadu, and government ministers are going shelter to shelter to help the people, but they could not extend their hands, helping hands to the public, because flood waters are in the streets. All the streets are flowing like rivers. So where is a chance to move to the people, sir? CM Tamil Nadu is having day in night. Even today morning, early morning also, he went out to see the people of Chennai, but he could not reach so many people together. So this is sorry state of affairs is prevailing in Tamil Nadu, and Government of India should come forward to help. In fact, yesterday the Home Minister has spoken to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. It is good. And at the same time, State of Tamil Nadu has sent 3 memorandums. Financial memorandums have been sent to the Government of India.
for an amount of 6,230 crores. But today the CM has asked for 5,000 crores, at least 5,000 crores for a stopgap arrangements. This matter has to be immediately, it has to be considered without fail, and they should extend the helping hand in time. In time means they have to do it quickly, and central team should be sent to the states, to the districts, wherever the problem arises, and quickly these teams should go. Enough teams should go so that in one go they should assess the situation, what is the damage occurred, how the more than 8 people have died so far, and we don't know what is the toll as of now. So this is more important issue. Even yesterday, when I discussed the matter in the BSc, both Parliamentary Affairs Minister and other ministers, they have agreed that it should be given topmost priority. But what is happening, sir? The fag end of the 0 hour, you are allowing me to speak. This is not good, sir. So actually, I thought that this should have a priority over the issues. I don't think that the other issues are not. They are also good issues. But at the same time, priority should be given to the human nature. That is what I am telling, sir. So kindly see that Government of India should come forward. The Home Minister should specifically take care to see that the amount is dispatched quickly, and also along with the men and machineries, so that to help the state of Tamil Nadu quickly, sir. Thank you, sir. You all are supporting the Baluji's argument, sir. It's a valid and legitimate demand, sir. ठीक है बैठिए श्री जयदेव गल्ला जी इसी थैंक यू सर ठीक है आप नाम भेजिए ना प्लीज नाम भेज दीजिए अभी तो बैठिए अभी तो उनको बोलने दीजिए प्लीज सेम सब्जेक्ट आप बैठिए बालू साहब बैठिए प्लीज सेम सब्जेक्ट हाँ अबाउट आंध्रा आल्सो वी आल्सो हैव प्रॉब्लम नो साइक्लोन बैठिए तो सही आपका विषय निश्चित रूप से सब सहमत हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार पहले से भी संज्ञान ले रही है और भी अधिक सक्रिय होकर के संज्ञान लेगी जी सर Thank you, sir. As the honourable member, Mr. T.R. Balu, has mentioned about the cyclone, we also have the same problem in lower coastal Andhra Pradesh. There has been very heavy rain over the last 2 days due to the cyclone over the west central Bay of Bengal of southern AP, sir. The Indian Meteorological Department announced landfall of Mishong today, somewhere between Bapatla and Machilipatnam in lower coastal Andhra Pradesh. Heavy rains have devastated the standing crop in tens of thousands of hectares in coastal and other districts of Andhra Pradesh. This cyclone has brought tears to the farmers as the crop which is ready for harvest is lost before their very eyes, sir. The state government is still in the process of identifying and assessing the damage, and it may take some time to come to the conclusion about the damage to crop, life and property. Due to the heavy rains, roads have been damaged, supply of electricity is disturbed, people are not able to fetch essentials apart from other problems being faced by them. In view of the above, I appeal the Honourable Prime Minister, Shri Modi ji, for immediately sending the central team once the rain recedes for assessing the damage caused to the standing crop, roads, buildings, electricity supply and other infrastructure facilities and submitting its report to the government for release of central assistance. Pending the report of the central team, I request the Honourable Prime Minister and the Honourable Home Minister to release 5,000 crores to Andhra Pradesh as an interim relief immediately to deal with the relief and rehabilitation work due to cyclone Mishong. Thank you very much, sir. Shri Mohan Bhai Pundaria ji. जी मोहन भाई आपका माध्यम से विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सौराष्ट्र क्षेत्र के विद्यार्थियों और उद्योगों के लिए वीजा फैसिलिटी सेंटर अहमदाबाद में होने के कारण 250 से 500 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है। इसलिए राजकोट औद्योगिक सेंटर है, यहाँ एम्स हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो इसके लिए वीजा फैसिलिटी सेंटर राजकोट में मिलने के लिए आपका माध्यम से मैं मंत्री का ध्यान आकर्षित करना और विनती भी करता हूं। थैंक यू। जी श्री एस रामलिंगम जी।
Mr. Lal, ji. மாண்புமிகு No. மாற்றுத் தலைவர் அவர்களே, Don't use these words, please. மயிலாடுதுறை Okay. And nothing is புகைவண்டி going on நிலையத்திற்கு record. அருகில் Please. மாப்படுகை Content பாலம் yourself. அமைக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கோரிக்கை. ரயில்வே நிலையத்திலிருந்து சுமார் 100 மீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது இந்த மாப்படுகை சாலை. ஆம்புலன்ஸ் தீயணைப்பு வண்டிகள் கூட அந்த சாலையில் நேரத்திற்கு சென்று சேர இயலவில்லை. சுமார் அரை மணி நேரம் ஒவ்வொரு புகைவண்டி நிற்கும் போதும் சாலை மூடப்படுகிறது. நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் தேங்கி கிடக்கிறது. இந்த மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தை புனரமைப்பதற்காக 24 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் 6 மாத காலமாக நானும் அமைச்சரை 3 முறை சந்தித்து இந்த கோரிக்கையை வைத்தேன். இன்று வரை எந்த பலனும் ஏற்படவில்லை. என்னுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதி வளர்ச்சி நிதியிலிருந்து அந்த சாலையொட்டி உடனடியாக எஸ்கலேட்டர் அமைப்பதற்காக 3.25 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி கொடுத்தும் பணி துவங்கப்படவில்லை. Please stop. Right now the arrangement of translation is not here. आपको मैं बाद में बुलाऊंगा. I will call you later. Now please you sit down. I will call you later. Please. हो जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है. नोटिस थोड़ा देर में आया. We will. Yes. Please cooperate. You all know the issues and the problems and what is the system. Shri V.K. Shri Kandan ji. Respected Chairman ji, Bharat Earth Movers Limited is a profit-making company with orders worth more than rupees 10,000 crore won through mostly global tenders. The company had made a profit of rupees 278 crore in 2022-2023 and the government so far got rupees 400 crore in the form of dividends. A unit of BEML at Kanjikot in my parliamentary constituency has already delivered 1,500 heavy military trucks, 300 railway coaches and 500 metro bogies. The government had to abandon a move of disinvestment in BEML in 2016 due to stiff opposition. The privatization move again is not in the interest of our nation's security. Therefore, I urge upon the government not to privatize BEML and withdraw such a move immediately. Thank you, sir. Shri Raghuram Krishna Raju ji. Thank you, Honorable Chairman, sir. This is regarding the Independence Gram Swaraj, which is initiated by Mahatma Gandhi, and later on the government followed, and in the government of Narendra Modi ji, lot of priority has been given to all the Gram Panchayats and lot of funds are also being released. In this case, last year to the government of Andhra Pradesh, 569 crores got released to the Gram Panchayats, but not even a single penny has come to the accounts of the Gram Panchayats, which was given under 15th Finance Commission. And in the 14th Finance Commission, starting from 2019 to 2023, around 8,629 crores got released, but nothing has been credited to the accounts. We all have met the Sarpanchas Association of Andhra Pradesh, where all party members are there, predominantly dominated by my present party. We all have met Honorable Minister Giriraj Singh ji and given a representation. He is kind enough to give a note to the state government to give back the money within 10 days. But in the last 3 months also, nothing has happened. Now, with this, the villagers are greatly suffering, and the dream of the Honorable Government of India, led by Narendra Modi ji, is not getting honored. So I once again request Honorable Minister
Giriraj Singh ji, who was here till now, I had already briefed him this morning also, through the Honorable Chairman, sir, to take it up immediately on priority. And one more minute, sir, just one more minute, I'll finish. And there has been a new system known as volunteer system, which has totally replaced the sarpanches and the ward member system, wherein totally dysfunctional. The village system has got totally dysfunctional. I request the Honorable Member Panchayat Raj, as far as the village development is concerned, it should be left with only the Panchayat, Sarpanch and the ward members, not with the volunteers. Thank you, sir. Okay. Dr. Dhal Singh Bisain ji. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान युग डिजिटल का है और इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नेटवर्क की आवश्यकता होती है और जैसा कि आपको विदित है अध्यक्ष महोदय कि वर्तमान में सारे काम ऑनलाइन होते हैं, चाहे ऑफिस के काम हो, किसानों के काम हो, पढ़ाई लिखाई के काम हो, चाहे विभागीय सारे काम हो, इन सब के लिए चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम हो, सभी काम के लिए ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो तो भारत जो है एक डिजिटल लेन देन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और डिजिटल लेन देन हो या कार्यालय कार्य इन सब के लिए मोबाइल नेटवर्क अति आवश्यक है अध्यक्ष महोदय। किंतु आज भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क सब जगह ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है और जिसके कारण से इन सारे विभागीय छात्र छात्राओं और अनेक सारे कामों के लिए नेटवर्क की उपलब्धता ठीक से नहीं होने के कारण, नेट ठीक नहीं चलने के कारण सारे काम प्रभावित होते हैं और विशेष करके बीएसएनएल का जाल लगभग उसके अलावा पूरे प्रदेश में नहीं सारे देश में बीएसएनएल एक अपने नाम के लिए जाना जाता है। पर सभापति महोदय अभी भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में 2G सेवाओं से आगे बीएसएनएल नहीं बढ़ पाया है, जबकि अन्य जो प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं वो 3G, 4G और 5G तक चली गई हैं और जिसके कारण से स्पीड में नेटवर्क नहीं मिलने के कारण से सारे लोग परेशान हैं, छात्र छात्राएं परेशान हैं, जो गांव में काम करने वाले पढ़ने वाले छात्र हैं वो परेशान हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में भी बीएसएनएल की सेवाएं और सुदृढ़ हो, अच्छी हो और इसके अलावा अन्य प्रतिस्पर्धी संस्थाएं उनका भी नेटवर्क अच्छा चले ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सारे ऑफिसेस को काम करने में अच्छी सुविधा मिल सके। आपने समय दिया सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अनुराधा चिंता जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, people living near oil and gas drilling sites in Andhra Pradesh, East Godavari districts face the risk of being exposed to oil or natural gas leakages from the plants located in the vicinity, especially in the Dr. B.R. Ambedkar Koresava district, which has been witness to such incidents in the past. According to reports, GAIL operates pipelines extending to a length of 430 kilometers. ONGC operates 120 kilometers of pipelines, and Reliance operates a 36-kilometer pipeline in the Konesima region. Though the officials of said companies have been asked to replace old pipelines in the region to ensure the safety and safety of the local communities and prevent mishaps and prevent frequent gas leakages from the existing pipelines, there is an immediate need to establish a crisis management facility in the district considering the operations of numerous oil and natural gas producing companies in the said region to effectively handle emergencies of crisis. I would therefore request to the government to take immediate steps to include a comprehensive risk assessment for the oil and natural gas operations in Konesima district and ensure the establishment of a crisis management facility at the earliest. Thank you. Dr. Sanjeev Kumar Shangri ji. Thank you, Honorable Chairperson, for giving me this opportunity to speak on railway issues of Kurnool Parliamentary Constituency. Sir, Kurnool Parliamentary Constituency, which I represent, deserves additional railway facilities in view of its overall backwardness. Andhra Pradesh has 3 regions with diverse culture and dialect. Rayalaseema region is one of them, and Kurnool is the gateway of Rayalaseema. Kurnool, the erstwhile capital of Andhra State, is a backward district in all respects. Demographic indicators stand testimony to this fact. Kurnool was capital of Andhra State from 1953 to 56. And the capital was shifted from Kurnool to Hyderabad when states were reorganized on linguistic basis. There is a strong feeling in Kurnool region that a serious historical mistake was done when the capital was surrendered in favor of Hyderabad.
The region was neglected for 7 decades by successive governments. This injustice should be relieved. Kurnool region is very backward as per the report of Sivaramam Krishnan Committee, an expert committee which was constituted under Section 6 of the AP Reorganization Act 2014. Kurnool region has challenges of high dependency ratio of 55%, low literacy rate of 65%, low urbanization of 29%, and has a young growing workforce. These problems need to be addressed with a humane touch, sir, and every investment in public utility cannot be seen from a commercial angle. Following the principles of natural justice, all regions of India should be developed equally. All of us should agree that injustice was meted out to Andhra Pradesh with unfair state bifurcation. We need a helping hand from the union government. Sir, economic growth, employment, income generation, and equitable distribution of growth are essential for all regions of Andhra Pradesh. It is distressing to note that domicile migration, that is distress migration from this area, is in lakhs every year. Nearly 3 lakh people migrate to different areas from Kurnool parliamentary constituency. The area has problems of water supply, though Tungabhadra River traverses 95 kilometers in Kurnool district. Only 60% of cultivable land receives water supply. People hardly cultivate 1 crop per year. So people travel hundreds of kilometers in search of job. People are asking for a better connectivity with cities like Visakhapatnam and Vijayawada, which are the 2 cities of Andhra Pradesh. National highway connecting Kurnool and Vijayawada, which traverses through reserve forest, needs upgradation. Road journey is tedious, and there is no express train connecting between Kurnool and Vijayawada and Visakhapatnam. So at least a good railway connectivity is needed for this region. We are not asking for a new railway track. We are just asking for a train service on the existing railway tracks. As a representative of 22 lakh population of Kurnool region, I have been requesting railway authorities for some facilities like train halts at Madhikera, Kosigi and Adoni, direct train service from Kurnool to Mumbai in favor of thousands of North Indian families doing business in Kurnool, and speeding up of construction of railway rehabilitation workshop at Kurnool. Sir, I made nearly 15 representations to Railway Ministry in past 4 years. Response is not encouraging. I take this opportunity to request the Honorable Minister of Railways to please start a daily train service from Kurnool to Visakhapatnam via Vijayawada. A tri-weekly train with number 07237 was running on ad hoc basis, but that too was withdrawn recently for reasons better known to the officials. Thank you. Thank you. Sir, passenger services cannot be viewed in commercial angle. Occupancy of the service was good enough and would have improved further had it been a daily service. Sir, to conclude, I request the Minister of Railways to restart the train on daily basis, and I hope this facility can bring solace to the injured hearts of people who feel that many historical blunders were committed against the region. There should be equitable development of all regions of the country. Thank you, Chairman, sir. Give me opportunity to raise very urgent and public importance matter which is related to my parliamentary constituency. Sir, the fight and agony of cashew workers who are workers in Kollam and Alappuzha in Kerala who are striking for want of renewed wages and decent benefits from their occasion is a grim and unfortunate picture of the crisis engulfing the cashew sector in Kerala, which is livelihood of more than 3.5 lakh workers, a majority of them being women from backward communities. The minimum wages of cashew workers are not revised even after 10 years since then Ummanchandi government, which was the last government to have increased the wages of cashew workers. The present state government under Chief Minister Pinarayi Vijayan has ignored the plight of cashew workers and their wages is not revised. The present wages are even lower than wages of Manrega workers. The strike of cashew workers, including in my parliamentary constituency, various cashew factories like Karimulakal, Noornad, and adjacent constituency, Kayangulam, and also Adinad, Kollam. So all factories come under Cashew Development Corporation. Demanding rise the minimum wages is not limited to Kollam district alone, but also these cashew workers are striking not only in Kollam district, other districts also. My Kalappi, Pathanamthitta, Thiruvananthapuram district also facing this crisis. So, but sir, the benefits of cashew workers, including ESI and PF benefit, also not
getting properly, because the BSI benefit is denied cashew workers because of the thin attendance, the working hours and also working days also working days also not properly. That's why ESI benefit also and also PF benefit also not getting for cashew workers. So I am coming, sir. Sir, the women cashew workers earn 500 rupees per day. Now workers are getting 35 for shelling 1 kg of raw cashew and 45 for peeling the kernel. The merged sum they get once in a while does not even cover their food expense or medical emergencies. Many women's cashew workers are now working as household help and do other sundry jobs sustain themselves. Sir, there was a time when more than 780 licensed cashew factories function in Kerala, which has now reduced less than 800 cashew factories. Please. Sir, I am coming, very important, I am coming, sir. Sir, the 1980s and 1990s, cashew has peaked 1,25,000 metric tons, which has sealed down to less than 20,000 tons. This situation indicates alarming crisis of entire industry. Banks have owned up numerous cashew factories and more than 10 cashew factory owners. More than 10 cashew factory owners whom small size factories own have committed suicide in Kerala. Therefore, the plight of the cashew workers must be addressed by declaring special package for welfare of cashew workers with the umbrella welfare option, including ex gratia, financial support during the period of. Sir, I am completely. आप अधिक समय लेंगे तो किसी अन्य मान्य सदस्य का अवसर समाप्त होगा. 1 minute, sir. Last point. Please conclude immediately. Last point. Sir, financial support during the period of unemployment, free medical treatment, and ESI hospital soft loans. The cashew workers must be given their fair share outstanding. Come to the demand outstanding. Yeah, I am coming to point, sir. So, outstanding bonds and other benefits of denied them due to winding down cashew factory, additional benefits, loan waivers, medical facility, all cashew workers, irrespective of the last status of employment and premium payment. With these words, sir, so very serious matter and also the. धन्यवाद सभापति महोदय. धन्यवाद सभापति महोदय. जीरो आवर की समय की मर्यादा का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए. थोड़ा बहुत 10-15 सेकंड चल सकता है, बट नॉट मिनट्स. प्लीज. धन्यवाद सभापति महोदय, आपका जोहार. मेरे लोकसभा रांची जो हटिया विधानसभा के नगड़ी नामक स्थान है, जहां से स्वर्ण रेखा पवित्र नदी निकलती है, जो रांची शहर होकर गुजरते हुए जमशेदपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है. 474 किलोमीटर लंबी इस नदी, जो झारखंड की लाइफलाइन कही जाती है, रांची की लाइफलाइन कही जाती है. झारखंड की प्राचीन संस्कृति में इस नदी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है. रांची में चुटिया नामक स्थान में स्वर्णरेखा नदी एक सहायक नदी हरमू में आकर मिलती है. इस संगम पर करीब 500 वर्ष पुराने नागवंशी कालीन 21 शिवलिंग नदी के चट्टानों में उत्कीर्ण है. कभी नागवंशी राजाओं की राजधानी चुटिया होती थी और वह सांस्कृतिक अवशेष एक जीवंत धनाढ्य संस्कृति की कहानी कहता था. किंतु अफसोस यह है कि झारखंड की जेएमएम एंड कांग्रेस की सरकार की अनदेखी के कारण, उदासीनता के कारण, गैर योजना से तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण यह नदी एक हरमू में मिलती है, वो नदी क्या नाले में तब्दील हो चुकी है. नदियों के किनारे अतिक्रमण, शहर का सीवरेज जो सिस्टम, उसका पानी और स्वर्णरेखा नदी में गिरता है. दिल्ली की यमुना नदी से भी स्थिति उस स्वर्णरेखा नदी की खराब हो गई है. इन दोनों नदियों के संगम तल के स्थल पर स्वर्णरेखा बिल्कुल काली पड़ती हुई जा रही है. आज से लगभग 10-15 साल पहले पूर्व से हजारों की संख्या में छठ व्रती वहां अर्घ देने जाते थे. महोदय, सभापति महोदय, बहुत अहम विषय है मेरे राज्य सारे विषय अहम होते हैं. मैं भी वहां सावन के महीनों कांवर लेके उस स्वर्णरेखा के नदी के तट से पानी लेकर
पहाड़ी मंदिर पर बाबा का अभिषेक करने जाते थे। वहां अनेक तरह के मेले, आप कृपा करके नरेंद्र नारायण भोजन क्या करके आप चाहते हैं ये बताइए। हर एक घर से एक एक मुट्ठी चावल और दाल लेकर प्रसाद बनाया जाता था, लेकिन नदी के प्रदूषण होने कारण लोगों ने इस नदी से खुद को दूर कर लिया। अब छठ और कार्तिक पूर्णिमा दोनों में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई। नदी के चट्टानों में उसकी जो शिवलिंग है मांग रखिए, तेजी से क्षरण हो रहा है। मेरी यह डिमांड है कि दीर्घकालीन योजना बनाकर इस स्वर्णरेखा नदी जो पवित्र नदी इसको बचाया जाए, क्योंकि वहां की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। यह नदी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको कैसे हम सब बचाएं, इस पर आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। श्री एस रामलिंगम जी। हमारा फोटो மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் அவர்களே, மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தில் சுமார் 100 மீட்டர் தொலைவில் மாப்படுகை நெடுஞ்சாலை அமைந்துள்ளது. இதில் மேம்பாலம் இல்லாத காரணத்தினால் அவசர காலத்தில் ஆம்புலன்ஸ், தீயணைப்பு வாகனங்கள் கூட செல்ல முடியாத நிலை. எனவே இந்த லெவல் கிராசிங் நம்பர் 229 இதில் உடனடியாக மேம்பாலம் கட்டப்பட வேண்டும். கடந்த 24/11/23 அன்று பொதுமக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் கூடி சாலை மறியல் செய்தார்கள். அப்போது மாவட்ட ஆட்சியர் தலையிட்டு விரைவில் இதற்கான பரிந்துரையை நான் அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லியிருந்தார். இருந்தும் கூட இதுவரை எந்த பணியும் துவங்கப்படவில்லை. இந்த ரயில்வே தடத்தில் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் அரை மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை தேங்கி கிடக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இதே மயிலாடுதுறை புகைவண்டி தடத்தில் இரட்டை வழிப்பாதை விழுப்புரம் வரை அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று பலமுறை வற்புறுத்தி இருக்கிறேன். இதுவரை செய்யப்படவில்லை. மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தில் எஸ்கலேட்டர் அமைப்பதற்காக முதல் பிளாட்பாரத்தில் இருந்து 3வது பிளாட்பாரம் செல்ல முடியாத நிலையில் என்னுடைய தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து 3.25 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்தும் புகைவண்டி துறையில் இதுவரை அதற்கான பணிகள் துவங்கப்படவில்லை. மேலும் 24 கோடி ரூபாயில் புனரமைக்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். 2 வருட காலமாகிறது, எந்த பணியும் இதுவரை துவங்கப்படவில்லை. நான் இப்போது கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் மிக மிக அவசரமான ஒன்று. இந்த மேம்பாலம் லெவல் கிராசிங் 229 இந்த மேம்பாலம் அமைந்தால்தான் அந்த பகுதியில் பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களை இணைப்பதற்கான வழிவகை ஏற்படும். எனவே உடனடியாக இந்த மேம்பாலத்தை அமைத்து தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री अधीर रंजन जी। Sir, I would like to flag the attention of this government that it is alarming to note that there is no respite of ethnic conflict and violence in the state of Manipur. Sir, it is paradoxical to note that on the one hand, both the central government and state governments are glibly claiming the peace and normalcy being restored in the state of Manipur. But on the other hand, the grave situation itself which is prevailing over there is an eloquent testimony of the abysmal failure of the state government of West Bengal, state government of Manipur. So the issue has come to such a pass that even day before yesterday, 13 deaths have been reported in the newspaper. But the issue is that the government has been found totally impervious to the intensity of the violence, to the sensitivity of the northeastern state, as if nothing is happening over there. So the government of Manipur has been totally failed to maintain the law and order situation in Manipur, and the situation has been right to discharge. एक मिनट में अपनी बात कहिए। The situation has been right. Sir, situation has been right to impose presidential rule. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज भारत सरकार के एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना
हर घर जल योजना के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मानवर एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके आस में गांव के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन मेरे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में हर घर जल योजना के कार्य करने वाली एजेंसियां मनमाने तरीके से गुणवत्ता विपरीत कार्य करके धन का अपव्यय कर रही हैं। इस तरह के समय से परियोजना पूरे न होने से संशय प्रतीत होता है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा गांव ग्रामीण की सड़कों के किनारे लेने वाली एजेंसियों ने सबलेट कर स्थानीय लोगों को काम दे दिया गया है। उन्होंने स्वयं भी सबलेट कर दूसरे लोगों को काम देकर गांवों की गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए बनी हुई सड़कों के किनारे गांव की इंटरलॉकिंग। शुक्रिया स्पीकर साहब, तुसीं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाउण दा मौका दिता। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ बनामुखी अमृतसर तो लालकुआं जयनगर अजमेर के टाटा नगर माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री को ध्यान आकर्षित करता हूं कि जो सड़कें गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में टूट गई हैं, ऐसी कार्यदायी संस्थाओं पर कानूनी कार्रवाई की जाए। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, अगले वक्ता के नाम में बोल दूंगा सर जी। शुक्रिया स्पीकर साहब रेल विभाग वालों अमृतसर तो चलने वाली ट्रेन जड़ियां ने वो अमृतसर तो बनामुखी लालकुआं जयनगर अजमेर टाटा नगर नंगल डेरा बाबा नानक पठानकोट ते चंडीगढ़ बंद कर दित्तियां गईयां ने। धुंध का बहाना लाया 1 दिसंबर तो लैके 29 जनवरी तक 2 महीने ट्रेन बंद ने। धुंध सिर्फ 15 दिन पैंदी है। पठानकोट डेरा बाबा नानक पट्टी ते ਜਿਹੜੀ खासकर चंडीगढ़ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ट्रेन हज़ारां लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ चंडीगढ़ राजधानी है हाईकोर्ट है, हज़ारां लोग उत्ते सफर करते हैं। 2 महीने लोग किवें जाणगे? किसान अपनी फसल लैके अमृतसर दे विच किवें आएगा? मजदूर जिहड़ा है वो अपनी मजदूरी वास्ते अमृतसर तक किवें पहुंच करेगा ते मजदूरी करन तो बाद घर किवें पहुंचेगा? वीरेंद्र जी माइक आप लंबी बात बोलने लगे हैं। बैठो यार सब बैठो तो बोले जी। अरे बोलिए सर। मेरी सरकार तो दरखास्त है कि 1 दिसंबर तो 29 फरवरी तक ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रेन बंद कीतियां ने उन्होंने बहाल किया जाए ताकि लोग वीरेंद्र जी सुखी रहन। श्री वीरेंद्र सभापति महोदय, मैं भारत की संसद को और यहाँ बैठे हुए सभी सांसदों को और देश में यहाँ अनुपस्थित सांसदों को मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए जैसे विश्वकर्मा योजना है, किसान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके लिए मैं अपने लोकसभा क्षेत्र बलिया में एक कार्यक्रम लोक संवाद का चला रहा हूं, गांव सभा से लोकसभा तक। उसमें सारे संबंधित अधिकारी उपस्थित रहते हैं, डीएम, सीडीओ और सबरे संबंधित अधिकारी और सारे विभाग के अपने सरकार की योजनाओं को लाभार्थी बनाते हैं। गांव सभा का सदस्य जो कभी पूछा नहीं जाता था, उस संसद के लोक संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित रहता है। और मैं निवेदन करता हूं कि पहले इसको लाभार्थी बनाओ, फिर 5 लोगों को ये लाभार्थी बनाएगा। मैं वहां के हमारा लोकसभा क्षेत्र बलिया 2 जिलों में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर। मैं वहां के डीएम, गाजीपुर के डीएम और बलिया के डीएम और सीडीओ, दोनों जिला के सीडीओ को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सारे संबंधित अधिकारियों को बुलाकर लाभार्थी वहीं बनाते हैं और उनको 5 लोगों को लाभार्थी बनाने का मैं निवेदन करते हैं। आपकी आप चाहते क्या है? आपकी क्या डिमांड है? लोकसभा आपकी मांग क्या है? गांव सभा से लोकसभा तक का कार्यक्रम भारतीय लोकतंत्र को भी गांव सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।